Hey everyone, welcome back to my channel. This today we will going to cover the exercise part of chapter 1 bookkeeping and accountancy subject of class 11. The chapter 1 क्या था? Introduction to bookkeeping and accountancy. So in this lecture we were only going to cover this exercise part. Okay, क्योंकि पूरा हमने इसका concept समझ लिया है. So let's begin with the exercise part. First, what is saying? Answer in one sentence. Answer in one sentence. First one, what is bookkeeping? Answer in one sentence बोलना है तो सिर्फ 1 या 2 लाइन में इतना ही आंसर हमें लिखना है. हमें फुल पैराग्राफ वाला आंसर नहीं लिखना है. ओके, आंसर इन वन सेंटेंस 1-2 मार्क्स जितना आएगा तो हमें उतना ही लिखना है. ओके, सो फर्स्ट इज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इधर से आप देख सकते हैं. बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्ड इधर यहाँ पे बुक कीपिंग is a bookkeeping is the art, science, systematic recording, classifying, summarizing financial transaction of the business for the particular period. इधर लंबा सा हो गया, हम शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, उतना ही आप लिखो. वो भी बुक का, हमें बुक का ही बुक का भी आप लिख सकते हो, वो रॉन्ग नहीं है. पर देखो आप अपने हिसाब से उसका कट शॉर्ट भी कर सकते हो. ओके, कहाँ गया? ओके, व्हाट इज बुक कीपिंग? सो आप लोग बुक लेके बैठे हो तो सीधा आप लिख लो अपने बुक में. 1 लाइन आंसर है. बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस सिस्टमैटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दैट्स इट. इतना ही लिखना है. वापस बोलूंगी, वापस आप लिखो. अच्छे से सुनो क्या बोला मैंने. बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस systematically in the books of accounts. Okay, clear? Right. Let's move on to further second one. What is meant by goods? Now what is goods? ये भी सब बुक में है, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ, आप बस लिख लो. ओके, what is meant by goods? Goods are items purchased or manufactured for sale to earn profit. हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है goods क्या है ना. गुड्स वापस बताओगी. गुड्स आर आइटम्स परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल टू अर्न प्रॉफिट. दैट इज योर गुड्स. लेट्स कम टू नेक्स्ट. थर्ड, व्हाट इज थर्ड नाउ? थर्ड इज व्हाट इज कैपिटल. फॉर कैपिटल यू कैन राइट कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर. व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर. दैट इज योर कैपिटल. Fourth one, what is drawings? Drawings are cash or goods withdrawn by the owner for personal use. Drawings are cash or goods withdrawn by the owner from the business. हाँ, एक और वर्ड यहाँ पे ऐड होगा. ओके, वापस वो कट कर दो, नया लिखो. Drawings are cash or goods withdrawn by the owner फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. बिजनेस से पैसा निकालेगा तो वो हो गया उसका ड्रॉइंग्स. ओके, सो लास्ट वन. नाउ व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या है अभी? फॉर गुडविल यू कैन राइट गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो दैट इज योर गुडविल. तो ये हमारा पूरा हो गया है. मैंने ये पूरा बताइए. आई होप आप लोगों ने लिखा होगा. ओके, नेक्स्ट. गिव द वर्ड, टर्म और फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, वी वर ऑन दिस पार्ट. ओके, हमें कुछ बोला, हमें एक वर्ड उस सेंटेंस के लिए हमें बताना है कि वो किससे रिलेटेड है. फर्स्ट वन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. आप लोगों को पता है ना क्या है वो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? यस, इट इज बुक कीपिंग. एक सेकेंड, जूम करती हूँ.
इट इज बुक कीपिंग। मैं शॉर्ट में बी के लिख रही हूँ, आपको फुल लिखना है, BOOK KEEING, बुक कीपिंग। ओके, बुक कीपिंग, BK। सेकेंड वन, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में पैसा डालता है, तो उसको क्या बोलते हैं? यस, दैट इज योर कैपिटल। कैपिटल। ओके, थर्ड वन, अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेबल। जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा हमको देना है, तो दैट इज आवर क्रेडिटर्स। तो वो हमारे क्या है? क्रेडिटर्स। ओके, नेक्स्ट, एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन में एक्सचेंज, कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो वो क्या है? यस, दैट इज योर ट्रांजेक्शन। उसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन। अभी मैं हटा रही हूँ, खिचड़ी सा हो गया। एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन, ट्रांजेक्शन। ओके, ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, एक्सेस। आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये जो वन, ये जो इधर जो लिखना है ना, ये आप अपने टेक्स्ट बुक में ही लिख दो, अलग से किसी बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, या आप अपने टेक्स्ट बुक में ही लिख सकते हो, अपने भी सफिशिएंट जगह है आपके पास लिखने के लिए। ओके, फिफ्थ वन, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। इनकम, एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, दैट इज योर लॉस। यस, दैट इज योर लॉस। A person, sixth one, a person whose assets are sufficient enough to meet business obligations. A person whose assets are sufficient enough to meet business obligation, जो जिसके पास एसेट ज्यादा है, जो अपना कर्ज चुका सके, तो दैट इज सॉल्वेंट। क्या है वो? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, पूरा लिखो, SOLVENT, सॉल्वेंट। ओके, next, art and science of recording business transaction. Yes, that is bookkeeping. Art and science of recording business transaction. That is bookkeeping. Eighth one, property of any description owned by proprietor. Property of any description owned by proprietor is your assets. क्या है ये? Assets. Eighth one, assets. Ninth one, assets which remain in the business for only for short time and can be converted into cash very easily. तो क्या है वो? That is your current assets. That is your current asset. पूरा लिखो, CURRENT, current, ASSETS, current assets. Okay, last one, allowance is given on catalog price of goods. अलाउंस, डिस्काउंट देते हैं, कौन सा डिस्काउंट में आता है? ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स, दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट। दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट। पूरा लिखना, TRAD, ट्रेड, DISCOUNT, ट्रेड डिस्काउंट। ओके, so you have finished our question number 2. Let's move on to further to question number 3. Select the most appropriate alternatives from those given below and write the statements. Okay. चार ऑप्शंस दिए आपको, उसमें से एक राइट करेक्ट आंसर चूज करना है। ओके, फर्स्ट वन, सरप्लस ऑफ इनकम, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इज, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, तो दैट इज योर प्रॉफिट, A1। तो फर्स्ट आंसर क्या है? A1, प्रॉफिट। सेकेंड, in dash basis of accounting, actual cash receipt and actual cash payments are recorded. कौन सा बेसिस है वो? जिसमें एक्चुअल कैश और कैश रिसिप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड होते हैं। यस, दैट इज योर कैश बेसिस, C1। थर्ड, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर इज नोन एज डैश। कस्टमर ने हमारा पैसा डुबा दिया, तो वो क्या है हमारा? वो है हमारा बैड डेट्स, A1। ओके,
Fourth, accounts must be honestly prepared and they must disclose all material information is known as accounts must be honestly prepared and disclose करना है पूरा material information क्वेश्चन में ही बोला है तो क्या है आंसर यस डिस्क्लोजर कंसेप्ट ओके डिस्क्लोजर कंसेप्ट डिस्क्लोज करना है यानी डिस्क्लोजर कंसेप्ट फिफ्थ वन अ कमोडिटी इन विच अ ट्रेडर डील्स इज नोन एज डैश फिफ्थ वन A commodity in which a trader deals is known as trader किससे डील करता है गुड्स से इनकम से प्रॉपर्टी से एक्सपेंडिचर से ऑफ कोर्स इट्स ऑफ गुड्स फिफ्थ का है ए गुड्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ वन dash means a reputation of business valued in terms of money yes it's a goodwill. Goodwill means a reputation of business valued in terms of money. It's not a trademark, it's not asset, it's not patent, it's only goodwill. Next, according to dash cash flow statements is prepared and presented for the period for which the period and profit and loss account is prepared. According to dash cash flow statement, अच्छा इसका कौन सा AS है AS3, AS10, AS6 और AS2? I think it's AS3. Yes, AS3. Next, the immediate recognition of loss is supported by principle of conservatism. Yes, conservatism. Immediate recognition of loss supported by principle of conservatism. It's not objective, it's not matching, it's not consistency, it's conservatism. Ninth one, brief explanation of an entry is called as ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो आप हर एंट्री के नीचे दोगे दैट इज योर नरेशन हमने नरेशन के बारे में भी पढ़ा था लास्ट एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और सर्विस बिटवीन द टू पार्टीज is termed as transaction okay here we complete this also let's move on to further state whether the following statements are true or false with reason आपको रीजन भी बताना है हाँ एग्जाम में अगर आता है तो रीजन भी लिखना है फर्स्ट वन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम थिंग नो इट्स फॉल्स ये है फॉल्स रीजन लिखोगे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी आर नॉट वन एंड द सेम थिंग दे आर बोथ कंप्लीटली डिफरेंट लिखोगे बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ओके आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आप ढूंढ लेना रीजन आपको मिल जाएंगे बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सेकेंड कंजर्वेटिज्म मीन्स टू फॉलो सेफ साइड यस ट्रू थर्ड डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यस ट्रू बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस नो इट्स एन लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इट्स अ फॉल्स Next, solvent person is a person whose assets are more than its liabilities. Yes, true. Next, cash discount does not appear in the books of accounts. Cash discount does not appear in the no. Cash discount appears in the books of accounts. ये गलत है. Trade discount does not appear in the books of accounts, but cash discount appears in the books of accounts. Okay. Next, a transaction is concerned with money or money's worth. Yes, true. Accounting is the language of business. Accounting is the language of business. Yes, very true. In earlier times of civilization, accounting was done by owners. No, owners नहीं उनके को नौकर करते थे. Last one, bookkeeping is useful to find out all tax liabilities. Bookkeeping is useful to find out all tax liabilities. Yes, true. समझा डन वेरी इजी इट वॉज बहुत आसान था लेट्स मूव ऑन टू फर्दर डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके अग्री एंड डिसअग्री ओके फर्स्ट वन अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू ओनर्स वी कंप्लीटली डिसअग्री
Accounting is only not only useful to the owner, it is useful to the government, owner, employees, creditors, bank. Okay, ये सब आते हैं. This is first one is disagree. Second, bookkeeping is an art, science. Yes, agree. Bookkeeping is art as well as science. Third, bills payable is an asset of the business. No, bills payable is the liability of a business. Disagree. Fourth, in bookkeeping and accountancy, only non-monetary transactions are recorded. No, it's also we also disagree with this. Non-monetary transaction record होता है क्या bookkeeping में? In an accountancy में नहीं. Only monetary transactions are recorded that give values in money or money's worth. Okay. Last one, the assets which give long-term benefit to the business are fixed assets. Yes, agree. The assets which give long-term benefits to the business, they are the fixed assets. Okay, done. And the last one we are on. Complete the following sentence. First, revenue arising as a result of business transaction is known as revenue आता है. Revenue arising as a result of business transaction is known as what is known as? Yes, it's known as income. INCOME, income. Second, excess of gross profit over operating expense is excess of gross profit over operating expense is our net profit. Net अब पूरा लिखना है NET net PROFIT net profit. Third one, an expenditure which is basically revenue in nature but the benefit of which is not exhausted within 1 year is called as deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure. Write it in a full form. Okay, the deferred revenue expenditure. Next, the amount deducted by the seller from the list price of goods at the time of sale is amount deducted by the seller from the list price of good at the time of sale is a trade discount. Is a trade discount. पूरा लिखना TRAD trade DICOUNT discount. And the last one, a person to whom business owes money for the goods or services is known as वो लोग जिनसे बिजनेस पैसा मांगता है. हम बिजनेस जिससे पैसा मांगता है वो कौन है? क्रेडिटर्स. A person to whom business owes money for the goods or services, they are the creditors. Okay. Done with this. Okay. So we completed our exercise part also. Next time we will do meaning and फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. चैप्टर 2 से आप सीखोगे डबल एंट्री बुक कीपिंग, एक्चुअल पार्ट आपके अकाउंट्स का. Okay class, we have done with our first chapter bookkeeping and accountancy. class 11th का अकाउंट सब्जेक्ट, उसमें चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी पूरा कंप्लीट, पूरा कवर अप हो चुका है. जिस किसने भी मेरे प्रीवियस का लेक्चर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर नहीं देखे हैं, दे कैन गो एंड वॉच कंप्लीटली फ्री फॉर यू ऑल गाइज. See you all in the next class with other subject. Okay. Found this video little bit helpful for you? Give a like button, share it with your friends, and subscribe to my channel so that you will get the further notification of my videos of lectures. Okay. And have any doubts regarding anything, you can ask me in the comment section. I will be very happy to help you out. So that's it for today. We will wind up for today. Okay. See you all in the next class with other subject, other topics. Till then, bye bye. Take care.